और आपका आज वीडियो में। स्वागत तो आज है। जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है When will Kalki अवतार arrive सदगुरु। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। धर्म संघर्षण सर्वे सर्वमहामृतम् आरतम्. The Kali, which means the age of darkness, in the cycle of the solar system, not in the cycle of the planet, in the cycle of the solar system, it does a cycle in 25,920 years. In this, if you divide it into half, there are 4 yugas and 4 yugas, totally 8 yugas. Only the Kali and the Sat are coming together, paired together, 2 Sat yugas, 2 Kali yugas. But the other 2 yugas, the Dwapar yuga and Treta yuga are separated by Kali and Sat yugas. Now this is… the yuga that we're talking about is significant because of the distance that we create between the solar system and the super sun around which it is going around. The further away that it goes, lesser the intelligence of the beings here. So Kali Yuga is a time when there is maximum distance. Because of this maximum distance, the human intellect is at its lowest. And then, as it starts moving closer, तो better होता जाता इंसान। human intelligence will begin to blossom. Actually, they go to the extent of saying that human ability to understand and use the electrical and magnetic forces in the human system will get better as it gets closer and get worse as it gets further away. Today you know, your intelligence is essentially how your neurons crackle in the brain. Yes? If you see a kind of a simulated image of the brain, you will see it's crackling around. Can we put this image? Do we have the brain image, Blue Brain project? So, you will see it's pulsating with crackling like electricity because how much electrical charge it can carry determines how well you can think, how clearly you can think. One thing that recently the physical scientists have come to, the yogic sciences have been saying this for a long time. The physical scientists have come to this, they are saying, looking at the physical laws that rule the solar system, they feel there is no room for further development of human brain. Why this is so is, if you increase the size of the neurons, it will become more capable, but it will take too much electricity. Right now as you sit here, 20% of the energy is being spent in your brain. 20% of the calories are right now being burnt in your brain, remaining 80% for such a big part of your body. 20% is spent only here in your brain, because brain is a high power-consuming part of your body. Suppose your brain became this big, you would need too much energy, you would need such a big stomach to accommodate that. I know some of you are trying, but it doesn't work that way. That's not the way it works. If you create such a big brain, you will not be able to supply power to it. If you increase the number of neurons, then you could still do better with the same amount of power.
But if you increase the number of neurons, then the way it is packed right now, the clarity of signals will go away. This is the case with many hyperactive children. The number of neurons in their brain is higher than normal. They are brilliant, but scattered all over the place. They can't think straight. They're That's brilliant in hyper. spurts, but nothing comes out of it because there is no clarity. So if you increase the size, it doesn't work. If you increase the number, it doesn't work. So they're saying according to the physical laws, it is not possible for human brain to evolve further, but we can learn to use it better. Right now, the way we're using it is a very mediocre way. See, that's an electric charge. So increasing the size of the brain or increasing the number of neurons are not possible, so they're coming to this conclusion that human intelligence cannot be enhanced, but it can be better used. Right now, the way we are using it is very mediocre. If more sophistication comes to the way you use it, you can increase your brain power, they're saying approximately 3,000 times than the way it is right now. 3,000 times more intelligent than the way you are right now would be incredible, isn't it? 3 times more would be fantastic. So we can learn to use it better, but we cannot evolve this brain further because the physical laws don't permit it. The yogic sciences have said this long time ago, that human intelligence and human body cannot be developed further because we have reached… the physical laws have reached this limit. Because the way the earth rotates around the sun and the way the moon cycles around this earth, all these things we have reached. Human body has reached that potential. It cannot go further. But at the same time, yogic sciences once again say, but your ability to use it can be enhanced by doing variety of things. One of the things that we spoke about just now is brahmacharya. That is, you can generate that kind of energy in the system that if you had 10 brains, it could still power it. If you have 25 brains, it could still power it. You could sit here and power 1,000 brains which are sitting around you by generating the necessary energy, by raising the kundalini, by bringing your energies to full force. You can power 1,000 brains if you want. That much energy is there. So we said, there are sages who are referred to as people who had 1,000 hands, 10,000 hands. Why it is being said is, what 10,000 men could do, one man is doing. In many ways, modern technology just represents that, you know. But in a much more internalized way, a human being can be in such a way that his intelligence could cover for 1,000 people or 10,000 people or 1,000,000 people, because there is another way of generating more efficient energy within the system. The scientists are looking at how body generates energy in its normal condition, and they're saying, if you have a little bigger brain, you won't be able to supply power to it. But there are other ways to generate, and you don't need a bigger brain, you don't need more neurons, you need more energy. If you had more energy, more refined energy, you would see, if you had to light this hall, there was a time you need 5,000 watt bulbs we were using. Today, you use 100 watt halide, it's on. Now, this hall is going to get… one of our meditators is sending it from United States to us, he manufactures the very powerful LED lamps. These bulbs are 12 volt, okay? 12 volt bulbs, they're going to light up the whole hall. This was unthinkable just 5 years ago. With 12 volt bulbs, you're going to light up such a big hall? We are going to do it. So with very little power, we are lighting up things because the way we use the power and the refinement
of how it happens, enhances our ability to use it. What goes for a LED lamp definitely goes for the human body and human brain. So that's what yoga is constantly exploring. So Kalki is to come to end the age. To end the age of darkness, he's supposed to come. See, the nature of time is such, nobody need to begin it, nobody need to end it. It goes on anyway. Nothing may happen to you in your life, but time will pass, isn't it? There's one thing you can be guaranteed of. In case you get some boon and become immortal, you may even become immortal, but you can't stop time from passing on, isn't it? So nobody has to begin an age and end an age. It is just that they said Kalki will come on a white horse, winged. So if horse has wings, it's a no good horse. Horse should have good legs. No? Am I saying something wrong? A horse should have 4 good legs, that's a good horse. A horse which has wings is a lousy horse. Yes or no? So obviously, they were talking about a white horse metaphorically, not as a horse. It is a metaphoric thing, that brightness will arrive. When the age passes, the darkness will move out and brightness will arrive, and it will destroy the darkness. If the hall is dark right now, if I turn on a light, does it destroy the darkness? What is spoken metaphorically? What is expressed dialectically? Foolish scholars or exploiters along the way make it all into black and white facts, made-up facts. It is a metaphorical expression. As the solar system moves, it moves into a dark phase, and as it moves out, light arises. It will rain upon us. Even if you don't want to be, suddenly your brain will crackle and work better because you moved into a different age. As we were saying this yesterday, even today, even in a comic book, even in a child's mind, my intelligence worked means light. Yes or no? Isn't it so? I got a bright idea, not a dark idea. Understand? Because intelligence, always human beings have associated with light. So, the scripture said, once the solar system moves out of this, a brightness will arise. This is very beautifully expressed. In the different yugas, human beings use different dimensions of intelligence, different dimensions of communication. In the Satyuga, mind will be more important. Mind, not intellect. Mind will be more important. Probably this is the only culture where we make a distinction between mind and intellect. Today, modern scientists have started doing it for the first time in the last decade or so. Otherwise, mind was just one thing. So, the mind will be the main thing of communication and living. That is, if I want to say something to you, I don't need a microphone, nor do I have to shout at you like this. If I think about this, you get it. In Satyuga, people barely spoke because mind was the means of communication. Everything that had to be done was just done mentally. Because it was all done mentally. They say even conception happened mentally. They go to the extent of saying, there was no physical conception, it happened mentally.
Then when they moved into the Treta Yuga, ice became important. So you will see when life moved into Treta Yuga, the language of people who lived in Treta Yuga are talking always about… One of the basic greetings in India was, "I see you." I think recently this Hollywood movie made this very popular, "I see you," Avatar. The basic greeting in this country was, "I see you." Okay, you see me, so what? No, that's not it. "I see you" means I see you through and through. So Treta people use their eyes powerfully. This is called as netra sparsha, that you can touch somebody with your eyes. When it moved further down, the breath became very important. We were already looking at this probably today morning or yesterday, that wherever the life energies are very high, there you will see your sense of smell will become very, very strong and sensitive. You will see this in the forest. Your sense of smell is more important than your eyes, ears and your brain. You know, really. Means you can just know what's happening with the person. In the sense, now a few months ago, a month ago, we had the fortune of having a guest in the ashram who was a king cobra. Now, he uses his tongue to taste you from a distance. He knows the chemistry of who you are. Well, myself and a few of the brahmacharis are handling this. He looks like a pet cobra. He's just playing with him. But he is not a pet, he is deadly. If he can move so quickly, and if he bites you, you have just 8 to 10 minutes. So you have just 8 to 10 minutes, that's all it gives you. It's deadly. It has enough venom to kill an elephant. But we are at ease with it because we understand that if you don't create the wrong chemistry in your system, he is fine with you. Cobra is the only creature who is so sensitive to your chemistry. All carnivorous animals and almost all wild creatures are sensitive to your chemistry, but particularly a snake is super sensitive. You can go in the wild and just pick up a venomous snake like this, not by the head catching like this, no, just like this. He will simply come if you are at total ease. If you show a little anxiety, if your chemistry shows little anxiety, little fear, that's it, he'll go for you. Because he instantly knows what is happening in your system. Sense कर लेगा। So, he's perceiving this in a certain way. The reason why the yogis are always keeping a cobra next to them and the Shiva has cobra next to him is, in terms of the creatures that are available on this planet, a cobra has maximum amount of etheric aura around him. That means he is fabulous perception. So, for perception, this particular animal is helpful and his perception is something that all yogis bow down to because his perception is even better than most human beings ever can be because of the etheric aura that he creates around himself. So you will see in the story there are many tribes which call them Nagas, they have the necessary sadhana going to generate a certain amount of etheric aura so that they can perceive what others cannot perceive. Because only what you perceive you know, the rest is all rubbish. Yes? It may be said by me, it may be said by a god, it may be written in a scripture, but it is all rubbish unless you perceive it. These dimensions of perception, mental perception, visual perception, by smell,
And now, when it comes to Kali, human beings become totally verbal. Their mouth becomes the biggest thing. So you need to understand this. The solar system is going through the yugas like this. If you are in tune with it, you are also going with these yugas. If you are above it, you can stay wherever you want. If you are stuck in your own things, the planet may be in Satyuga, you may be in your Kali Yuga. So every individual is still free to either transcend the yuga or be trampled by the yuga or ride the yuga as it is. All the three possibilities are there. So Kali or the end of the Kali, Kalki is supposed to come down on a white horse with wings. Don't get yourself a horse with wings, get yourself a horse with legs. This is funny, isn't it? But it was metaphorically spoken because the light or the intelligence need not necessarily come from you, it is coming because of a heavenly possibility, because the solar system is moving out of that phase. Your intelligence will come out bright and it's a gift from nature. It is dropping upon you. It is a celestial gift. Because it's a celestial gift and there are certain constellations which are seen as a flying horse. You know this? There are certain constellations which are seen as a flying horse. They said it will descend upon you and destroy your darkness. If you want to destroy darkness, nobody needs to fly on a horse and come down. If you just turn on a small light, darkness gets destroyed. Darkness is the most fragile thing. But even that people can't get rid of because they're employing wrong methods. Suppose we turn off the lights and it's dark and you decide, suppose this hall is dirty, if I tell you clean it up, all of you with great enthusiasm if you go, probably in 15 minutes' time you can have the hall cleaned up. Now the hall is dark, then I tell you, get this damn darkness out. If all of you go with great enthusiasm, till you die, if you do, still it will not go. But if we turn on a light, it will go. That is the nature of darkness. That is why a light being on a flying horse came down and took away the darkness. Unless you have still allowed it to live within you. भाई जब मैंने वीडियो का टाइटल पढ़ा तो मुझे ये लगा था कि जो कल्कि अवतार हैं उनके बारे में जो है बताया जाएगा कि भाई उनके आने का जो है वो टाइम कितना दूर जो है वो रह चुका है। लेकिन जो है ना जब ये देखिए तो भाई बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से जो है ना वो समझाया गया है कि भाई जितनी भी चीज़ें ना सबसे पहले तो हमारे दिमाग में हमारे दिल में जो है ना वो बैठी हुई हैं, उन्हें निकालना जो है ना वहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, मतलब कि अंदर की डार्कनेस को ख़त्म करना ज़रूरी है। और वाकई में मुझे भी ये लगा था कि कुछ इस तरह से बताया जाएगा जो हम लोगों ने मूवीज़ के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू देखा है, बट एक बिल्कुल कम्प्लीटली मैं कहूँगी डिफरेंट हम लोगों को नज़रिए से आज समझाया गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो कहीं ना कहीं पर आपको बहुत सारी चीज़ें स्ट्राइक करती हैं कि लाइक हम लोग सोचते हैं, जैसे उन्होंने मतलब बीच में एग्जांपल्स दी कि एक तरह से मेटाफोरिकली आप चीज़ों को लेते हो, रिजेंबल करते हो और एक कनेक्शंस बनाते हो। बट अगर मतलब अगर आप रियलिटी में देखो तो अपने आप को जानना, अपने अंदर को जानना और अपनी खामियों को मतलब अगर आप सही करते हो तो अगर बेशक आप कलयुग में हो तो भी आप किसी और युग में ही रहोगे, क्योंकि आपने अपना लेवल जो है वो ऊपर कर लिया। बिल्कुल, ये मुझे उनकी बात जो है ना एक बहुत अच्छी लगी कि बेशक आप सतयुग में हैं लेकिन अगर आपका अंदर से सही नहीं है ना तो आप उस सतयुग में भी जो है ना कलयुग में जो है ना वो आप जी रहे हैं। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि भाई आपका दिमाग, आपका दिल, आपके एक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर जो है
बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है मैटर करते हैं। और जैसे बीच में जो है कोबरा की जो बात की गई, तो लिटरली एक चीज़ होता है कि भाई अक्सर औकात जानवरों के बारे में ये चीज़ की जाती है कि जब आप जानवरों के पास जाते हैं तो वो आपकी वाइब्स जो होती है ना उनको सेंस कर लेते हैं, उनको जो है पता चल जाता है कि भाई ये बंदा जो है ना ये इस टाइम नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ये एनर्जी क्या है उसको जानवरों को जो है पता चल जाती है। तो नो डाउट भाई वीडियो में जो है ना ओवरऑल जो है ना डिफरेंट जो है एग्जांपल्स देकर जो है जो एक चीज़ बताई गई है, मेरा ख्याल है कि भाई उस कोर को जो है ना वो समझने की ज़रूरत है कि भाई हमारे एक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हर चीज़ को लेकर, क्योंकि हम जिस चीज़ में भी एक्ट कर रहे होते हैं ना उसमें हमारा जो इंटरनली हमारा उतावलापन कह लें, हमारी अच्छाई कह लें, हमारी बुराई कह लें, ये जो हमारे अंदर है वो उस एक्ट में दिखाई दे रहा होता है। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगी जिस तरह से उन्होंने डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताए कि लाइक किस तरीके से लोग पहले मतलब उनको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि हम लोगों ने भी ये चीज़ सुनी है लाइक कि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि लोग मुंह से बात नहीं करते होते और अगला बंदा जान जाता था कि क्या कहना चाह रहा है। तो वो एक एनर्जी होती थी जिससे मतलब अगर देखा जाए तो जो सेंस कर पाते हो आप चीज़ें, वो एक एनर्जी है जो ट्रांसमिट हो रही है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो अभी क्योंकि हम जिस युग में हैं डेफिनेटली यहाँ पर जो लोग हैं वो मुंह से बहुत ज़्यादा बातें ऐसे शब्द निकालते हैं जिसमें पॉजिटिविटी भी होती है जिसमें नेगेटिविटी भी होती है। तो डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरीके से लेते हैं अपने लिए और हम उस चेन को कैसे ब्रेक करते हैं। और मुझे लगता है कि चेन को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी होता है, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मुझे पहले लगता होता था कि ना जब मैं किसी एक मूड में होती थी ना, मेरा मूड ख़राब हुआ तो मैंने उसी मूड में रहना है, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मतलब ऑब्वियसली वीडियोस देखकर वो बुक्स से या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको जब कुछ ऐसा सीखने को मिलता है कि आपको स्विच कर जाना चाहिए, आपको उस चेन को ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद सब चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर लोग करते हैं लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो जब आप जितना जानते हैं और समझते हैं अपने आप को, अपने अंदर को, और उस डार्कनेस को ख़त्म करने की और उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं तो आपके जो लेवल हैं वो इंक्रीज और अप होते हैं। यार असल में आज के टाइम में ना एक चीज़ जो बहुत कॉमन आपको देखने को मिलती है कि हर इंसान दूसरे को तो सही करना चाहता है लेकिन अपने आप को जो है ना वो सही कोई भी जो है वो नहीं करना चाहता। उसमें मैं कहूँगा कि आज के टाइम में ईगो का बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो एक इशू आपको देखने को मिलता है। फेक रियलिटीज जो उनके एक फेक पन जो है, फेक स्टैंडर्ड, हाँ फेक स्टैंडर्ड्स बिल्कुल, वो जो है बहुत ज़्यादा लोगों में जो है ना आपको नज़र आता है। अच्छा पहले वक्त में जो है ना लोग ये चीज़ समझते थे कि यानी कि अच्छा समझते इस चीज़ को कि अगर कोई बंदा सच बोल रहा है, सच का साथ दे रहा है तो उस चीज़ पे उसको अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में ना चीज़ें एकदम हमने उलट कर दी हुई हैं। बेवकूफ़ हो गया, नहीं बेवकूफ़ लोग बोलते हैं ऐसा, हाँ बेवकूफ़ कहना एक अलग चीज़ है, लेकिन आज के टाइम में लोग उन लोगों को पसंद करते हैं ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होकर जो है वो चलते हैं। एग्जाम्पल्स जो है उनकी दी जाती है, यार फलाना बंदा जो है बहुत डिप्लोमेटिक है, उसे जो है ना वो सही पता है कि भाई किस सिचुएशन में जो है ना किस तरह बिहेव करना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो ना बहुत सारी चीज़ों को जो हम कहते हैं ना हमारे अंदर की डार्क रियलिटी है, हम जो है ना वो जब दूसरों में देखते हैं तो हम जो है ना एक तो उससे खुश भी होते हैं, हमें वो अच्छा भी लगता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे अंदर जो एक डार्कनेस है ना कहीं हमने खुद ही उसको जो है ना पाल कर रखा हुआ है, हम जो है ना उसे छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए तो हम लोग कलयुग में है ना। लेकिन मैं मौसम की बात से स्लाइटली सा डिफर करूंगी। उसका रीजन ये है कि अभी जो मौसम में डिप्लोमेटिक वर्ड यूज़ किया ना, मैं उसको गलत नहीं समझती आज के टाइम में, क्योंकि अगर हम महाभारत भी देखते हैं ना तो उसमें भी डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको एक्ट करना है, अब वो यही चीज़ जो है वो सिखाई जाती है। अब हम उसको किस तरीके का किस रंग का नाम देते हैं, अब हर इंसान की डिप्लोमेसी नो डाउट डिफरेंट होती है, बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत वाइज होते हैं और उनको वो एक आर्ट आता है कि वो किस तरीके से मतलब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सही तरीके से एक्ट करना है। अब ये नहीं है कि हर सिचुएशन में आप कुछ इस तरह से एक्ट कर लोगे नेगेटिव के साथ और आपको ये डिप्लोमेसी है। मेरे ख्याल में उसमें भी एक डिफरेंस होता है।
बट ये कि हम परसीव कैसे करते हैं चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाकी जब वीडियो स्टार्ट होने लगी थी और महाभारत का बीच में से मतलब टाइटल आया भी था, तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया था कि लाइक लास्ट तक मैं ये पूछूंगी कि क्योंकि एक हम लोगों ने पहले सोचा हुआ था कि कल्कि की जो हम लोग एक जो स्टोरीज सुनते आए हैं या जो वीडियोस देखते आए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो मेरे बल्कि जहन में ये बात चल रही थी कि जैसे कहते हैं कि अभी जैसे मतलब कलयुग जो है ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से सतयुग आ जाएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा और फिर कलयुग आएगा, तो ये रिपीट होते रहते हैं। बट आज एक नया तो हम लोगों को अब कह लो कि नया एंगल से सीखने का मौका मिला। दूसरा पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ रहा था कि क्या जो मतलब इंसिडेंट्स हैं जो हम लोग पास्ट में सुनते आए हैं, ठीक है ना, जो एक हिस्ट्री बन गए हुए हैं, क्या वो भी रिपीट होते होंगे मतलब विद टाइम? मुझे मतलब ऐसे मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी। एनीवे गाइज, आज मुझे इस वीडियो से एक और चीज़ पता चली है कि पहले टाइम में जब हम लोग डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, लाइक आप कह लो बिल्डिंग्स बनी हुई देखते हैं, या कि वो इतनी अच्छी क्यों बनाई जाती थी और उन पर इतना अच्छा काम क्यों होता था और वो इतने लंबे अरसे तक हमें अभी तक क्यों देखने को मिलती हैं। तो वो मैं आज की वीडियो कहीं ना कहीं देखकर मुझे मतलब ये चीज़ जो है ना, एक कह लो कि रियलाइज़ हुई है कि वो लोग जब बहुत एडवांस थे, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा एडवांस है, इस वजह से उनकी चीज़ें भी हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।